Hello everyone, good evening. Warm welcome to Testbook JAIIB CAIIB YouTube channel. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session where we will be solving the questions related to Module B of PPB, and this is part 5. I know part 3 and 4 are pending. I will be providing the video for that so that you can complete 100 questions from the same module. So without any further delay, let's get started with the discussion, guys. This is our Telegram channel. Do join it for getting the updates regarding the upcoming sessions to go. First point, the first question is now on your screen. I'll not take much time of yours. Let's revise it quickly. Under the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institution Act 1993, pehla point, the Act provides for constitution of Debt Recovery Tribunal, which are 39 in India, and Debt Recovery Appellate Tribunal, which are 5 in India. Check this and give me in the comment section that whether this 39 and 5 figures are correct or not. The Act applies only to the recovery of dues from corporate debtors and not to individuals. That is wrong. So it applies to everyone. Next is bank and financial institutions can file applications to DRT for recovery. That is true. DRT possesses certain powers of civil court. Bilkul sahi hai. Decision of DRT is not final. It can be challenged in front of DRAT. So answer क्या बनेगा? So 134 B option is the correct answer. अगला question देखो. Regarding the SARFAESI Act, select the correct statement. SARFAESI empowers secured creditors to take possession of the secured asset and sell them without court intervention. बिल्कुल सर, इसीलिए तो SARFAESI आया था कि कोर्ट का इंटरवेंशन खत्म किया जाए. SARFAESI applies only to the creditors who are banks and exclude registered NBFCs. ऐसा नहीं है. It is applicable in general. SARFAESI can be invoked for enforcement only after borrower has committed a default. SARFAESI तभी लगेगा हाँ जब आपका borrower default करेगा. ट्रू है. एक्ट में नोटिस देना होगा आपके कस्टमर को, 60 दिन का वेट करना होगा. 60 दिन में अगर कस्टमर वापस आता है बैंक के पास तो ठीक, वरना यू विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी. Borrowers aggrieved by action under SARFAESI must first approach civil court. नहीं सर, borrowers aggrieved by actions under SARFAESI must approach civil court. नहीं, that is not correct. It will approach to DRT, है ना. DRT या DRT पे जाएंगे ना कि सिविल कोर्ट पे. आंसर इज 134. अगला क्वेश्चन देखो. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात करें तो दिस कोड प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन एजुकेटिंग अथॉरिटी. दैट इज करेक्ट. आपकी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द एजुकेटिंग अथॉरिटी. दैट इज करेक्ट. अ मॉरेटोरियम अंडर IBC सस्पेंड्स एनफोर्समेंट ऑफ ऑल जजमेंट्स इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस. दिस इज रॉन्ग. ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. द कमेटी ऑफ क्रेडिटर एक्सरसाइजेस प्राइमरी कमर्शियल डिसीजंस मेकिंग इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. ये सही है. लास्ट पॉइंट आता है, इफ नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन द कॉर्पोरेट डेटर प्रोसीड्स टू लिक्विडेशन. ये करेक्ट है. IBC applies only to corporate bodies. No sir, it applies to partnership, limited partnership liabilities as well. So answer is going to be 134. B option is the correct answer. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 रिलेटेड मैकेनिज्म. अगर हम बात करें तो क्या मैकेनिज्म है? The act provides free legal services to eligible persons including the weak and disadvantaged. तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज. दैट इज ट्रू. द एक्ट एम्फेसाइजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत्स एंड देयर अवार्ड्स आर फाइन. नहीं सर, लोक अदालत के अवार्ड्स फाइनल एंड बाइंडिंग है. ये सही है. दैट इज करेक्ट. द एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट लॉयर्स. नहीं सर, जो एम्पैनल्ड प्राइवेट एडवोकेट्स है दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल. स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट. दिस इज करेक्ट. Legal aid under the act is limited to criminal defense only. No sir, it is allowed for the civil defense also. So if it is allowed under the civil defense, so this statement is wrong. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 124. A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखो. Principles under the law of limitation. A written acknowledgement of liability resets the limitation period for debt. तो ये जो आपका written acknowledgement है of liability, उससे क्या होगा, आपका जो limitation period है for a debt that will reset. ये बिल्कुल ठीक है. Limitation for an action founded
on a contract begins when contract is made irrespective of the breach. This is wrong. Irrespective of the breach नहीं sir. Contract begin होगा नहीं, जब breach होगा तब. For tort claims, limitation runs from the date when the tort was committed. ये सही है point. अगला point है court can freely extend the statutory period of limitation in ordinary suits. No, this is not allowed. Part payment of a debt resets the limitation period for recovery of that debt. ये सही है. Part payment of debt restarts the limitation period for the recovery of that debt. ये सही है. So answer क्या बनेगा सर? 135 is the correct answer. अगला question देखो. Contract of indemnity. अब indemnity के basis पे अगर हम बात करें, पहला, a contract of indemnity involves two parties, indemnifier and indemnity holder, that is indemnified, correct. Indemnity holder may recover from indemnifier losses caused by act of third party as long as loss is within the indemnity scope. ये भी सही है. And indemnity must always be in the written, is always be in writing to be enforceable. अगर हम indemnity की बात करें सर, ये written में होगा तो better है, लेकिन oral भी मान्यता रखी जाती है. So this is not 100% correct. Implied indemnity arises, for example, when an agent act on the behalf of principal. बिल्कुल सही है, तब उसे implied indemnity कहा जाता है. Contract of indemnity are frequently used by banks to cover losses from the third party claims. ये सही है. So answer क्या बनेगा सर? 1, 2, 4, 5, that is B statement is correct. अगला question देखो. Contract of guarantee. Parties are general, principal, debtor, creditor and surety. guarantee में 3 parties involved होती है, तीनों बिल्कुल ठीक है. Consideration is necessary for a valid guarantee. बिल्कुल सर, उसके बिना valid मानी नहीं जाएगी. Surety's liability is coexistence with the principal debtor unless expressly limited. बिल्कुल सही. Continuing guarantee can be revoked by surety by giving notice to the creditor for future transaction. बिल्कुल सही है, आप इसे revoke कर सकते हैं. Debt of the surety automatically extinguishes all the past liabilities. No sir, that is not correct. Answer is going to be 1, 2, 3, 4. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ श्योरिटी एंड इम्प्लीकेशन. पहला पॉइंट क्या कहता है? इफ क्रेडिटर रिफ्रेन्स फ्रॉम सुइंग प्रिंसिपल डेटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड. इफ द क्रेडिटर रिमेन्स और इफ द क्रेडिटर रिफ्रेन्स फ्रॉम सुइंग प्रिंसिपल डेटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज. ये बिल्कुल सही है. Surety has a right to have securities held by creditor applied first before calling upon surety. That is also correct. बिल्कुल सही है, word by word. Variation of the terms of principal contract without surety consent discharge the surety. This is correct. The principal debtor has an implied promise to indemnify the surety when surety pays the creditor. This is also correct. अगला पॉइंट क्या कहता है? Misrepresentation by creditor to the surety about the debtor's solvency never affect the surety liability. गलत है सर, surety की liability तो affect होगी. This is wrong. Remember that. Moving on to the next one. Bank guarantees and bank's obligations. Bank guarantee is generally independent of underlying contract between applicant and beneficiary. That is principle of independence. बिल्कुल सही है सर. Issuing bank must take usual precautions, correct beneficiary name, clear terms, expiry date. बिल्कुल सही है. On presentation of a confirming demand, bank should not dispute the underlying commercial transaction between the applicant and beneficiary. This is correct. The bank must investigate and verify the underlying performance of the principal prior to making payments under a simple demand guarantee. ये point गलत है. Bank guarantee are generally disclosed or treated as contingent liability. सही है. So answer is going to be 1, 2, 3, 5. D option is correct. Last question of the evening, letter of credit. Letter of credit एक separate contract of payment है between issuing bank and beneficiary, independent of the sales contract. It is independent of the sales contract. बिल्कुल सही है. Common letter of credit parties include applicant, beneficiary, issuing bank, advising bank. बिल्कुल ठीक है, कोई problem नहीं है. Under UCP 600, banks examine documents not goods. Bank examine documents not goods. हाँ, goods को तो नहीं examine किया जाता. Banks are concerned with performance of seller before honoring and letter of credit. Before honoring a letter of credit, banks are concerned with the performance. Quality से कोई मतलब नहीं है. Quality bank will not check.
A confirmed letter of credit carries an additional bank underwriting to pay in addition to the issuing bank obligation. That is correct. So these are the 10 questions. Actually, I have to solve undoubtedly 20 questions, लेकिन I have a next class at 9:30. उस वजह से ये क्लास थोड़ी डिले हो गई क्योंकि पिछली क्लास में था. It was a mismatch because of me. But don't worry, जो रिकॉर्डिंग में दूंगा उसमें आपको मैं 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा so that the things are clear to you. ठीक है जी. So don't worry, I'll cope up with the compensation. लेकिन अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा. लेकिन जाने से पहले अगर आप चाहते हैं इस PDF को डाउनलोड करना, इट विल बी अवेलेबल ऑन अ टेलीग्राम चैनल. और हमारा जो क्रैश कोर्स है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड, डू जॉइन इट फॉर November 2025 JAIIB एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. विल कैच यू सून. बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल.